Today we will learn about nouns and this is number. 4 हमारा आज स्टार्ट हुआ लेसन एंड दिस इज़ अबाउट नंबर्स. अब ये देखिए, अगर एक बुक है तो हम लिखेंगे 1 बुक. ज़्यादा हैं, जैसे ये 4 बुक्स हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बुक्स. एस ऐड कर देंगे. एक 1 पेंसिल है तो 1 पेंसिल. यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हैं? हाउ मैनी पेंसिल्स? हाउ मैनी पेंसिल्स आर हेयर? 1 2 3 4 5 6. हाउ मैनी कब कहते हैं? जब हमें पता करना हो कि कितनी पेंसिल्स हैं. हाउ मैनी पेंसिल्स आर हेयर? देयर आर 6 पेंसिल्स. हाउ मैनी बॉयज़? 3 बॉयज़. हाउ मैनी कैट्स? मैनी कैट्स. मैनी कैट्स भी कह सकते हैं. 1 2 3 4 5 कैट्स भी कह सकते हैं. जब 1 होगी कैट तो सिर्फ कैट आएगा, और अगर मैनी कैट्स होंगी तो उसके साथ एस लग जाएगा. ये आपने बस याद रखना है. समटाइम्स वी हैव टू मेक इट क्लियर हाउ मैनी. उसको क्लियर करने के लिए वी हैव टू मेक इट क्लियर हाउ मैनी. दैट इज़ द नंबर ऑफ द सेम काइंड ऑफ पर्सनस. ये सेम है ना, सेम काइंड ऑफ थिंग्स और पर्सनस वी आर टॉकिंग अबाउट. 1 or more than 1. 1 or more than 1. If this is 1, we will say 1. If this is more than 1, we will say 3 boys, 6 pencils, 4 pencils. These examples make it clear that most nouns have 2 forms. The first form, book, pencil, boy, cat, tells us that only one of the same kind of person or thing is meant. Only one person or thing is meant. The second form is books, pencils, boys, cats tells us that more than one of the same kind of things or persons are meant. Different nouns have different ways of changing their forms to show numbers. We shall now look at a few ways in which this change is made. Now you will remember this in this lecture, that we will add s when there will be more books, and now you will write these books, these all the nouns in your copy, and you will also draw the pictures of them in your notebook. Okay.